एवरीवन, दिस इज़ मी चांचू श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत फ़नी होने वाला है बिकॉज़ आज हम जा रहे हैं एक और डेस्टिनेशन पे और हम जा रहे हैं वापस से घूमने एंड आई एम सो एक्साइटेड टू गो एंड ट्रैवल दैट प्लेस बिकॉज़ वहाँ मेरा जाने का सच में बहुत ज़्यादा मन था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। एक्चुअली अभी जा रहे हैं वैसे, बस अभी हम जाएंगे। हमारी कार नीचे अभी मतलब आई नहीं है, बस हम बुला रहे हैं एंड विल कम एंड विल गो। हाय मम्मी। हाय। हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सो चलो चलते हैं। चलिए चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन में। हमारा सामान इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है बाय द वे, और हम बैठ चुके हैं हमारी कार में। हमारी ट्रेन हावड़ा से थी, सो वी आर गोइंग टू द हावड़ा। सो वी आर एट द स्टेशन करेंटली और अभी कुछ हो रहा है 8:59, इट्स गोइंग टू बी 9। ही इज़ वॉचिंग मैच बाय द वे और हम जा रहे हैं। मुझे सच में बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है वहाँ जाने की। एंड हाँ, आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगी वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच। एंड फाइनली आवर ट्रेन हैज़ अराइव्ड। अब आपको मैं बता देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, और हम क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं, अभी वो सस्पेंस रखते हैं। मैं ये बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं दिल्ली फॉर सम वर्क। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तब मैं दिल्ली में हूँ एंड अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और चलो चलते हैं दिल्ली। एंड वी आर हेयर एट आवर ट्रेन। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। हालांकि आपको लाइट ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं होगी बिकॉज हाँ, थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमारा स्टेटस क्या है। यहाँ पे है भैया, यहाँ पे है पापा, ये लोग अभी ये सब सेट कर रहे हैं। इधर है मम्मी, हेलो मम्मी। और इधर है अभी ट्रेन मतलब चलने वाली है एंड आई एम रीडिंग बुक बिकॉज आई वॉज गेटिंग बोर्ड। सो या और फिर खाया हमने हमारा टेस्टी खाना, यानी कि दिस वाज द फ्राइड राइस, सूजी का हलवा एंड विद दैट थोड़ा सा आम का अचार। एंड फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग 24 आवर्स ऑफ जर्नी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन में। हमें एक्चुअली जाना था गाज़ियाबाद स्टेशन। फ्रॉम देयर वील गो टू नोएडा, जहाँ पे मेरी मौसी रहती है। मेरे मम्मी के बड़े पापा की डॉटर वहाँ पे रहती है, तो हमें वहाँ पे जाना था। ये देखो, ये बाहर का गाज़ियाबाद का स्टेशन है, बट क्योंकि हम इतने रात में पहुँचे थे इसलिए हमें कुछ ज़्यादा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली इतना दे रहा था, बट सच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। एंड विद दिस हमने अपना कैब बुक किया और चलते हैं मौसी के घर। एंड फाइनली वी रीच्ड ऑल्सो। तो मेरी मौसी के घर में ना संतरे या ऑरेंज का पेड़, मेरी मौसी को वैसे फ्लावर्स और पौधों का शौक़ है। इसी के साथ हम चलते हैं नोएडा से दिल्ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मौसी का घर नोएडा में है, तो इट टेक्स 1.5 आवर टू रीच दिल्ली। एंड विद लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। Delhi, or New Delhi, which is the Indian Capital Territory and is a metropolitan area in the country's north. New Delhi is famous because of the presence of the forts and the famous statues or monuments built over here. दिल्ली इसलिए भी फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मुगल और पांडव्स यहाँ रहते थे एंड ब्रिटिश वाज आल्सो लिविंग हेयर।
तो आइए चलिए हम भी दिखते हैं इस दिल्ली में, जो कि एक बहुत पॉपुलेटेड और बहुत बिजी शहर माना जाता है। हम भी घूमते हैं इस शहर को और हम भी जानते हैं इस शहर में ऐसी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसे हमारा नेशनल कैपिटल बनाया गया है। दिल्ली का सबसे पहला नाम पड़ा था इंद्रप्रस्था, जहाँ पे पांडव रहते थे, और फिर ब्रिटिश के आने के बाद इसका नाम पड़ा ओल्ड दिल्ली एंड फाइनली अब जाके इसका नाम पड़ा न्यू दिल्ली। चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन में, जिसे हमारे इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है, यानी कि द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट इज़ बिल्ट बाय शाहजहाँ और उसने इसे इसलिए बनाया था ताकि वो अपनी कैपिटल शाहजहानाबाद में दरबार रख सके। रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ध्वजारोहण हुआ जाता है, यानी कि हमारे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाता है। ऑन 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन हमारा परेड निकलता है इंडिया गेट से एंड इट गोज़ टू राष्ट्रपति भवन एंड देन इट कम्स एट द रेड फोर्ट और फिर वहाँ पे होता है हमारा ध्वजारोहण। आई रियली वॉन्टेड टू गो इनसाइड द रेड फोर्ट, पर क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है यानी कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, इसकी वजह से अंदर डेकोरेशन चल रही थी, बट फिर भी मैं कितनी लकी हूँ कि मैंने डेकोरेशन होते हुए देखा। And also, Shah Jahan built the Red Fort on 12th May 1689. Red Fort is also known as Lal Killa in Hindi and it is mostly famous for its Hindi word Lal Killa. The word Lal Killa came because the Red Fort is made up of the massive red sandstones. The Red Fort is situated on the Netaji Subhash Chandra Bose Marg, which is situated in the Chandni Chowk, which is a very famous market in Delhi. Now let's move to the another famous structure which was built by Shah Jahan, again Shah Jahan, और इसका नाम है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद is 8 minutes away from the Red Fort and you can take any electrical auto to travel from one place to the another. जामा मस्जिद जाने के रास्ते को हम कहते हैं मीना बाज़ार, जहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। शौरमा मिलेगा और फिर वहाँ पे जो भी फेमस फूड्स होते हैं वो आपको मिलेंगे, मोहब्बत शरबत, और यहाँ पे आता है हमारा जामा मस्जिद। आइए जानते हैं जामा मस्जिद आखिर है क्या। Masjid-e-Jahannama, also known as Jama Masjid, was the famous and the largest mosque in India, which was built by Shah Jahan. It is considered as the most important mosque for all the Islamic people and for all the Muslims. The Jama Masjid is open for all the tourists and when you enter this, it's such a heavenly peace. मतलब सच में आपको इतना सुकून मिलेगा और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। ये इस साइड बहुत फेमस आर्किटेक्चर्स बनाए गए हैं एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली. Mostly on Friday it is closed because the namaz is done on Friday, which is the famous prayer and the important prayer for all the Muslims. Jama Masjid or Masjid-e-Jahannama was built between 1650 to 1656. Inside the Jama Masjid there is a prayer hall which is usually open every day, but it is most crowded in Friday. This prayer hall consists of 61-meter length and 27-meter breadth. This part of Chandni Chowk, where the Red Fort is situated and the Jama Masjid is situated right opposite, that is why this area is known as the best brotherhood, showing the brotherhood between the Muslims and Hindu. Before going to offer their namaz, they usually wash their hands and their legs and their face so that they can offer the namaz. This was the bazaar where you can buy anything in सच में यहाँ पे कुर्तियाँ and then मोजरीज ज्वेलरी सब बहुत अच्छे मिल रहे थे, खाना बहुत अच्छा मिल रहा था, टॉयज़ थे। जिन लोगों को शॉपिंग बहुत पसंद है ये उनके लिए बेस्ट जगह है। दिस इज़ द कनॉट प्लेस और सीपी विच इज़ मोस्ट फेमस फॉर देयर शॉपिंग एंड फाइनेंशियल हब्स।
Most of the commercial brands and the famous brands are situated over here. Connaught Place is situated in the central Delhi and it is usually very crowded. In the Connaught Place, you can also find the local shops and you can also find the major and the big brands over there. Connaught Place is literally a heaven for shopaholic. There are many brands like Tanishq, Miniso, Bata, H&M, Nykaa and many more. We also drank the famous Banta, which is usually a soda in which we mix some pinch of lemon and pinch of black salt, which tastes very refreshing. After that, we entered into the very famous monument in Delhi and in India, which is the India Gate and the Rashtrapati Bhavan. The India Gate and the Rashtrapati Bhavan is situated just opposite to each other. One side there is the India Gate and it is full of greenery, and on the other side the Rashtrapati Bhavan is situated, and from the path which we go is known as Kartavya Path. The Rashtrapati Bhavan is the official government residence where the president stays. It was formerly known as the Vizhory House and it was made by the British. The Rashtrapati Bhavan was opened on 1931 and the surroundings are so pretty. It is filled with tulips, flowers, and it feels so good to just lay down on the grass and just feel heaven. The Rashtrapati Bhavan और इंडिया गेट सबसे सुंदर लगता है when it comes the sunset. Sunset के टाइम पे when all over the lights open, it just feel awesome. If you're interested in the history of India Gate, so you should visit the museum. It is free of cost though. And you will get to know the history about the India Gate. Now let's talk about the India Gate. The India Gate is a war memorial which is situated in Delhi in the Kartavya Path. During the World War I, when 70,000 plus soldiers were killed, this India Gate was built as a remark for all the soldiers, and now it is considered as the most important and the most fascinating tourist destination in Delhi. The height of India Gate is 42 meters. It was established on 1921 and it was opened on 1931. The India Gate looks heaven during the night because it changes color and the color is very pretty. The colors changes accordingly, but it looks very pretty. And with that, we finished our Delhi tour. एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर. आई होप आपको हमारा ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा मज़ा आया होगा इस व्लॉग में. और अगर आपको मज़ा आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि दिल्ली का नेक्स्ट व्लॉग जब आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अगर आप दिल्ली गए हो, कहाँ कहाँ जगह पे गए थे, कमेंट्स में ज़रूर बताना. और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. बाय बाय, लव यू एंड जय.